Right. So, friends, with this very first theoretical topic called synchronizing threads. So, when I'm looking at synchronizing threads, I'm looking at a very simple concept of considering that a thread object. So, when you say synchronizing threads, what are we talking about? Now, let's say that we have two threads here. Let me mark one thread as T1 and the other thread as T2. So, these two threads T1 and T2 over here are planning to use a particular resource or a particular variable. This resource will be called hereafter as a critical resource because it is going to be used by two or more threads. This critical resource example could be a database, it could be a file, it could be a variable, it could be as simple as a flag. That means I made a variable called flag equal to 0 or 1, and even that can become a critical resource if it is being used by two or more threads. Now, the point is, this critical resource should only be used by at the most one thread at a time. So consider that we are keeping a lock over this critical resource. I repeat, I please assume that we are keeping a lock over this critical resource. So if I'm creating a lock or keeping a lock over a critical resource to get the key to the lock, I get my words, to get the key to the lock, I need to acquire the lock. So acquire function basically says that we are going to acquire a lock to the critical resource. And so obviously if T1 has acquired the lock, that means T1 can use it. And if T2 tries to use this, he will not be able to do so. His request will be rejected. Because critical resources, I am sorry, I can't give my lock to you because my lock has already been acquired by T1. So consider that acquire method is like a key. एक चाबी है वो, यू नो क्रिटिकल रिसोर्स के ऊपर अगर मैंने लॉक रख दिया है तो उस लॉक को ओपन करने की जो चाबी है वो T1 को अक्वायर करने से मिलती. Now, if T1 has acquired the lock, it is obviously the responsibility of T1. I repeat, it's obviously the responsibility of T1 to release the lock when its work over the critical resource is over. So when the work over the critical resource is over, T1 says, okay, I'm releasing the lock. Now, obviously, when the lock is released, the critical resource is free, and it can be now taken over by the next thread. So what the third, is this not our code's responsibility? Uh, Synchronization per se can keep track where internally in Python a queue object is going to be maintained, and this particular queue object is capable of, I repeat, this particular queue object is capable of basically uh, acquiring the lock and releasing is okay, but then this queue object is actually maintaining the queue of how many people have demanded a lock over the critical resource. So let's assume that we have a thread T1, we have a thread T2, and we have even more threads. देखिए पर एक टाइम पर तो एक ही थ्रेड यूज कर सकता है ना. सो ऑब्वियसली अगर थ्रेड T1 को लॉक दिया गया है और नेक्स्ट रिक्वेस्ट T2 ऑनवर्ड्स अप टिल T10 का अगर आया हुआ है, so you will have to maintain them in the queue. Otherwise, how will they ever get the locks? So moment T1 releases the lock, the next thread in the queue, waiting in the queue, would get a chance to acquire. I'm not saying to going to get the lock, is going to get a chance to acquire the lock. Now, why I'm using these critical words so critically, that get a chance to acquire the lock? Because see, there is a possibility ना कि T2 से लेकर T10 तक जो वेट कर रहे थे क्यू में, उसमें T2 कहता है अभी मुझे ये रिसोर्स की जरूरत नहीं है. सी T2 को तब रिसोर्स की जरूरत थी जब वो क्यू में आकर ज्वाइन हुआ था. Assumingly at 2:13 p.m., which is the time right now, the thread T2 said I need this resource, but the resource was not free, and therefore he joined the queue.
And after 1 minute, when the resource got free, at 2:14 p.m., the thread T2 says, no, my work is over. I don't need the resource. So if at 2:14, if the thread T2 doesn't need the resource, then he's not a fool to acquire the lock. Just because a queue में खड़ा तो lock acquire नहीं करेगा. So the thread T2 actually is, gets deleted from the queue. That's the reason I said that the threads which are waiting in the queue technically are given a chance to acquire the lock over the critical resource. And when one who acquires the lock, it's a blind rule. One who acquires the lock, please by heart with this fact that has to release a lock also. Okay, right? So I hope this acquire, release, lock, all concepts are clear. Right. That is what is already explained in the notes also. Okay. Right. So I will now venture into the programming part. Okay. Now this is not the synchronization example. Please, this is not a synchronization example at all. This is a different way of writing your code. So I'll pick up the whole code from here. This is another way of thread programming without creating a subclass, without explicitly coding run. Please have a look. So you will notice that I've coded very simple two functions. One is a print cube function, जिसको आप एक नंबर पास कर रहे हो. जो भी नम में आपने नंबर पास किया है वो उसका क्यूब निकालकर आपको रिटर्न कर रहा है एज यू कुड सी, नम इनटू नम इनटू नम. There is another function which is similarly coded called print square, which is printing num square as you could see. Okay, so there are two arbitrary functions. कुछ कनेक्शन नहीं इन फंक्शंस का थ्रेड से, अभी तक कोई कनेक्शन नहीं. There are two independent functions. Now, because you and I both know that whatever code we do is coded in a main thread, and that main thread is called as a main module. So if name is equal to main, although this is not necessary, I'm honestly repeating, this is not necessary. If you think don't want to do the code, you don't want to code like this, you can remove it. I have no problems. आप उसको निकाल सकते हैं. Okay, then I will have to bring back the indentation. और कुछ नहीं, I have to bring back the indentation of every line back to the initials. बस अब वो lines की जरूरत नहीं है ना. If main module is equal to मेन, वो तो नेचुरली होगा ही, बिकॉज जिसमें हम कोड करते हैं वो मॉड्यूल का नाम मेन होता है और थ्रेड का नाम मेन थ्रेड होता है. ठीक है, तो जो चीज़ हमें को पता है डिफॉल्ट से, चलो हम उसको चेक नहीं करते. ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, ये जो सारा जो कोड आप देख रहे हो स्क्रीन पर, अल्टीमेटली मेन थ्रेड के अंदर लिखा हुआ है. तो इस कोड में मैं T1 करके एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, which belongs, and T1 is an object directly of the root of the parent class thread. हाँ, ये प्लीज देखिए, प्लीज चेक कीजिए. रिपीट अगेन. T1 is an object of the thread, is not an object of subclass. It's directly the object of the parent, that is thread. Now the thread constructor in Python has this constructor in which it allows you to specify a target. Target का मतलब होता है कि जो थ्रेड आप बना रहे हो उसका रन फंक्शन को क्या कोड मिलेगा. सो टारगेट बेसिकली मीन्स जो थ्रेड ऑब्जेक्ट आप बना रहे हो उसके रन फंक्शन को आप क्या कोड देना चाहते हो. आप कह रहे हो कि थ्रेड T1 के रन फंक्शन को हम प्रिंट स्क्वायर देना चाहते हैं, एंड थ्रेड T2 के रन फंक्शन को हम प्रिंट क्यूब देना चाहते हैं. ओके, बट प्रिंट स्क्वायर एंड प्रिंट क्यूब वोंट रन ना विदाउट द आर्ग्यूमेंट्स. यस, वेरी गुड थिंकिंग. दे वोंट रन विदाउट द आर्ग्यूमेंट्स. आर्ग्यूमेंट्स देना भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी. args is equal to 10 comma, args is equal to 10 comma. क्वेश्चन इज, जब मुझे एक ही आर्ग्यूमेंट देना है तो क्या जरूरत थी एक टपल बनाने की. व्हाई डिड आई मेक अ टपल, व्हाई डिड आई मेक अ कलेक्शन. नाउ फ्रेंड्स, दैट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द कंस्ट्रक्टर ऑफ थ्रेड. द थ्रेड कंस्ट्रक्टर सेज that the first parameter target is going to be the name of the function which is going to do the work of run, and the second parameter is the set of arguments which you want to pass. Set of, please hear me clearly, set of, collection of arguments which you want to pass
to the run function or to the thread, which means the syntax of a thread constructor is forcing me to give my input as a collection. Therefore, whenever we give or whenever we do this modern way of programming a thread, the second parameter is always a tuple, even if there is one element. Tomorrow, if there are two elements, you would have written like this 10 comma 20, simple. But because there is only one element, you're writing as 10 comma. I'm sure you will ask, sorry, why 10 comma? Just write 10. See, writing in brackets 10 does not mean that you're making a collection. Because collection by rule, by definition, collection means one or more. हाँ ठीक है ना रॉकी जी, वन और मोर तो वन है ना इसमें। जी बिल्कुल वन है, लेकिन जब आप ब्रैकेट्स में 10 को ऐसा लिखते हो और जब आप ऐसे लिखते हो तो दोनों में बहुत अंतर है पाइथन के पॉइंट ऑफ व्यू से। आपके पॉइंट ऑफ व्यू से सब दोनों सेम दिखते होंगे आपको, बट पाइथन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अंतर है। पाइथन सेज writing only one number 10 in brackets, this means that it is not a collection, it's only one individual element. But writing 10, putting a comma like this in brackets, or writing 10 comma putting another square brackets, so if you put square brackets or you put parentheses like this is a case where you're forming a collection, and because you're forming a collection, therefore uh, we are able to suffice the requirement of the constructor anyway. So I went a lot into theory, right? Okay. So T1 and T2, two thread objects got formed. Further, starting thread 1 and thread 2, T1 को start किया, T2 को start किया. Further, we are joining both the threads, as you could see, T1 join, T2 join. So joining both threads means you're joining the main thread to them, और कुछ नहीं. So main thread को आपने join करवाया दोनों threads के साथ, so that लाइन नंबर 30 तभी एग्जीक्यूट हो जब दोनों थ्रेड्स अपना काम फिनिश कर चुके हैं. लेट मी शो यू द आउटपुट्स. I'm wondering what went wrong. It says exception in thread 1. Fine, we will figure out what went wrong. Okay, but cube output has come as 1000. Oh, the comma is missing. Yeah, that's right. And so this is where the output comes. Square something, cube something, done. So now could all of you please run this particular code of print cube and print square? And how many ever have run? Please should say done on the chat. How many ever have done should say done on the chat. I'm surprised till now nobody has done. This shouldn't have taken more than 30 seconds to 1 minute to do it. कोड तो पूरा है ना वहाँ पर वर्कस्पेस में. Okay, Vishwendra is done. Waiting for a few others. Good, Deepa says done.
Okay, right. So okay, so now I'm going to request Deepa to please come on audio. Yes, sir. Right. Deepa, I request you to please read this comment for the class for all our FDV participants. Uh, Threads belong to a process, and second, we can get the ID of the process to which the threads belong. So, do you agree that every thread and every process has an ID? Yes, sir. Right. Do you also agree that thread has to belong to a process, or can a thread be independent? Uh, it belongs to process. Always. Perfect. Very good. Okay. Okay. Second, is there a need that I should always, or rather, should I like write if name equal to main, or is it by default always the main module and the main thread? So I didn't get you actually. What you asked? I have written this line of code, no, line number 12. If Yes, name yes. of the current module is equal to underscore main, ये लिखना जरूरी है या any which ways our program runs in a main module and the main thread? Mm, so ये I think लिखना जरूरी है because each process having main. करेक्ट. सो नहीं, लिखना ज़रूरी नहीं है. अगर हम इसको इस केस में लिखना ज़रूरी नहीं है बिकॉज इस केस में हम लोगों ने सारा कोड मेन थ्रेड से ही किया है. Okay. But yes, if we were doing project and there were many project files, then yes, we would have to write if name equal to main to indicate the main project file from where the project should start. But Yeah. here it is optional in this case. Okay. Okay. Now, my don't worry, I won't ask you any question which I haven't spoken about in the morning. So what I wish to know from you is कि इस प्रोग्राम को अगर आप यहाँ पर देखें, can you explain me line number 21, 22, 25, 26, 29, 30? Can you explain these six lines to me? What are they doing? Uh, so 21 and 22 we are creating the threads, Hmm. and no, we are starting means, and 25 we are starting the threads. Correct. So when you say that you're creating the threads here in this modern or the different or constructor approach where you're using a thread constructor to do it, may I know that thread T1's run function or run method is with whom? With what method is it? With the start, sir. Task one. Okay, just task one. So Mm, T1's run method is defined by the target of T1. No, target of T1 is task yes, one, yes, and sir. T2's run method is defined by the target of by its target and its target is task 2. Yeah. So these are the two functions. So Okay. task 1 is becoming run of T1 and task 2 is becoming run of T2. Okay. Okay. Yeah, please continue. What the when you say T1 dot start, तो वो किसको रन करता है, किसको इन्वोक करता है? Start will run function को. बट रन फंक्शन तो है नहीं ना यहाँ पर, आपको पता है ना इसमें कोई रन फंक्शन नहीं है. Run. No, sir, I didn't. Target. ओके, नो प्रॉब्लम. Okay. Mm-hmm. टेल मी वन थिंग, मैं वापस से दोहराता हूँ. जब आपने ये Mm-hmm. थ्रेड ऑब्जेक्ट बनाया तो आपने इस थ्रेड ऑब्जेक्ट की रन को कौन सा मेथड एलोकेट किया? Uh, मैंने हाईलाइट भी कर रहा हूँ कौन बोर्ड सा पर. बना? हाँ, टास्क वन. हाँ, सिंपल. तो जब मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि T1 डॉट स्टार्ट किससे कॉल करेगा, आंसर सिंपल है, टास्क 1 को कॉल करेगा. ओके. यस राइट. है, टास्क वन को. राइट, यस, क्योंकि यस. जब आप थ्रेड बना रहे हो तो इसका थ्रेड का रन का काम टास्क 1 कर रहा है. टास्क. विच मीन्स वेरी क्लियरली कि T1 को जब आप स्टार्ट करोगे तो T1 को स्टार्ट करने का मतलब जो बंदा रन का काम कर रहा है T1 का वो कॉल होगा, और वो कॉल कौन होगा? टास्क 1. टास्क वन. परफेक्ट. ठीक है. अब बताइए अपने आप से मुझे कॉन्फिडेंस होकर T2 डॉट स्टार्ट क्या करेगा? टास्क टू को रन करेगा, सर. परफेक्ट. ओके. और ये जो मेन थ्रेड के अंदर हमने T1 डॉट ज्वाइन लिखा है, T2 डॉट हाँ, ज्वाइन हाँ. लिखा है, ये क्या करता है? सर
ये वेट करेगा कि टिल इट विल कंप्लीट टास्क वन एंड टास्क टू कंप्लीट नहीं हो जाते तब तक। करेक्ट, बहुत बढ़िया। जब जब तक T1 T2 कंप्लीट नहीं होता तब तक मेन कंप्लीट नहीं होगा। होगा बिल्कुल सही, क्लियर। बिल्कुल सही। बट क्या है ना, इसके बाद कोई फंक्शन या कोई लाइन नहीं है, तो मैं यहाँ पर एक लाइन डाल देता हूँ, प्रिंट हियर एज मेन एंड्स नाउ, जैसे आउटपुट में दिखे जब मेन एंड हो। राइट, या यू कैन रिलैक्स नाउ, यू कैन टर्न ऑफ योर ऑडियो। राइट, थैंक यू। Okay, so now, friends, if I look at the program of main thread, I can see that I'm printing the ID of the process, and to get process for any thread, you have to write the standard code os.get process ID. os.get PID stands for os.get process ID. So you said import os here, and after the import os, you're saying os.get process ID. Okay. Next is main thread name can always be fetched from writing threading module dot main underscore thread dot name. This is going to return to you the name of the main thread. Please remember, we are writing this because we know confidently कि जो प्रोग्राम हम जिस जिस जो प्रोग्राम हम डील कर रहे हैं वो मेन थ्रेड है। ये बात आप जानते हो अच्छी तरह से, because whatever main code you write which creates other threads, that code has to be the main thread. The next, if you look at these two lines, I have repeated this in task 1 and task 2 also. In task 1, which is called by thread T1, I'm printing the current underscore thread, मतलब T1 का नाम, and I am also printing the process ID of the thread T1. सेम चीज रिपीट हो रही है टास्क 2 में भी, बस फर्क इतना है कि टास्क 2 को कॉल करने वाला बंदा T2 था। सो T2 का उसने नाम प्रिंट किया, थ्रेड T2 का नाम प्रिंट किया, एंड थ्रेड T2 का प्रोसेस आईडी प्रिंट किया। आई नो आप में से कुछ लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि ये क्या हो क्या रहा है, मतलब व्हाट इज दिस। पेशेंस रखिए, आउटपुट देखिए, काफी कुछ क्लियर हो जाएगा। मुझे बताना आप सबको ये है कि जो 3 थ्रेड्स हमने अभी कोड किए हैं, एक मेन थ्रेड, उसके अंदर से हमने T1 बनाया, T2 बनाया, ये तीनों थ्रेड्स, मेन थ्रेड, T1 एंड T2, आफ्टर ऑल एक ही सिंगल प्रोग्राम को बिलोंग करते हैं जो आपके पास है, ये दिस वन, दिस प्रोग्राम। और ये जो सिंगल प्रोग्राम फाइल आप देख रहे हैं, दिस सिंगल प्रोग्राम फाइल इज अ सिंगल प्रोसेस, एंड दिस सिंगल प्रोसेस इज हैविंग अ प्रोसेस आईडी एज 13432। तो आप मेन थ्रेड में खड़े होकर प्रोसेस आईडी पूछ रहे हैं तो आपको ये जवाब मिला। आप थ्रेड T1 में जाकर प्रोसेस आईडी पूछे तो आपको ये जवाब मिला। आप थ्रेड T2 में जाकर प्रोसेस आईडी पूछे तो आपको ये जवाब मिला। इसका मतलब क्या हो रहा है? इसका मतलब ये हो रहा है कि आप प्रूव कर चुके हो प्रैक्टिकली कि एक प्रोसेस में मल्टीपल थ्रेड्स होते हैं, और इस प्रोसेस में हमारे पास 3 थ्रेड्स हैं। उसमें जो पहला वाला है वो मेन थ्रेड है, ये थ्रेड T1 है, ये थ्रेड T2 है। मैं मानता हूं कि मेन थ्रेड ही T1 को स्टार्ट करता है, मेन थ्रेड ही T2 को स्टार्ट करता है, मैं बिल्कुल मानता हूं, बिल्कुल, आई फुली एग्री विद इट। ओके, सो मेन T1 को स्टार्ट करता है और मेन T2 को भी स्टार्ट करता है। राइट, सो दिस आई होप इज काइंड ऑफ क्लियर। और तीनों क्योंकि एक ही प्रोसेस P को बिलोंग करते हैं, इसके लिए जब प्रोसेस आईडी प्रिंट करने की बात है तो तीनों ने एक ही आउटपुट दिया, 13432। एंड आवर फ्रेंड दीपा जस्ट नाउ वेरी करेक्टली सेड टू अस कि ज्वाइन करने से ये होगा कि जब दोनों थ्रेड्स एंड हो जाएंगे तभी मेन का ज्वाइन के बाद जो कोड लिखा है वो रन करेगा, तो वो लास्ट में आया एज यू कुड सी। Okay, I want everyone, all of you, to run this piece of code. This is very important. All of you running this code. You done with this? You will tell me a yes. Like, you can give me some indication. PID done.
because this program is trying to tell you that for all threads belonging to the same process, the PID is going to be same. Friends, Vismita is done. Waiting for others. Please, more participation is required. Please don't be mute spectators. If you are mute spectators, and why the purpose of having a practical session? Okay, right. So I get a few more acknowledgements that they have done. Very good. ओके, अब दोस्तों आपका ज़्यादा पार्टिसिपेशन आता है। प्लीज हियर मी क्लियरली, आपका ज़्यादा पार्टिसिपेशन आता है। फॉर द नेक्स्ट 15-20 minutes you have to participate more than I will speak, because there are some simple codes in front of you and you have to answer what is going to be the output of theirs. I'll give you complete hint. I've defined a arbitrary function called worker, or independent function called worker. यहाँ मैंने लिखा है threading dot thread, so I'm making a thread object जिसका target या run method worker है और उसको आपने यहाँ पर start किया है। और ये जो कोड है थ्रेड ऑब्जेक्ट बनाकर उसके मेथड को स्टार्ट करने का, ये इटसेल्फ आपने एक फॉर लूप में रखा है जो 5 बार काम कर रहा है। सो पहला सवाल आप लोगों को कि क्या इस प्रोग्राम में ये जो एरे थ्रेड्स है या लिस्ट थ्रेड्स है, एम्प्टी लिस्ट जो रखी है मैंने, क्या ये किसी भी एंगल से यूज में आ रहा है? आपका आंसर यस या नो होना चाहिए। क्या ये लिस्ट जो थ्रेड्स आपको दिख रही है, क्या ये किसी भी तरीके से यूज में आ रही है इस प्रोग्राम में? यस और नो। ओके, नम्रता सेज नो, इट्स नॉट बीइंग यूज्ड। ओके, वेटिंग फॉर अदर्स। कुछ तो और ओपिनियन भी आने चाहिए ना। Okay, so there's no other opinion coming. Right, but by the way, Namrata's answer is correct. It is no. This array or this list called threads is of no use in this program. It's useless. It's not being used. It just kept for confusing. For loop पे वो 5 बार काम करेगा और वर्कर 5 बार प्रिंट करेगा, वो नेचुरल चीज़ है। अगर आप इस थ्रेड्स को निकाल दें, array को निकाल दें, लिस्ट को निकाल दें, तभी प्रोग्राम सेम तरीके से काम करेगा। चेक कीजिए। सो नम्रता इज करेक्ट, आंसर इज नो। वो लिस्ट यूज बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। Well, very good. So what we're doing next is I'm coming forward with the next program as the next question. Right. So the next question which I'm picking up is question number 2. So Sonal, what you have done exactly is mistakenly picked up the second program and you're wondering that you're running the first program. आप second program run कर रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि आप first run कर रहे हैं. Please be careful. You can check it your code.
सेकेंड प्रोग्राम में हम थ्रेड्स एरे को यूज कर रहे हैं, लिस्ट को यूज कर रहे हैं, राइट. सो दिस इज माय सेकंड piece of code in which I have the list called threads, which is of course being used. I repeat, which is of course being used, as you could see here. So you made a thread object. I repeat, you made a thread object, and this thread object you appended it, or rather dumped it into a threads list. So what we're doing is we are making thread objects, we are dumping it into a list, and then we are starting the thread. But to be very, very honest, if I comment these two lines of code, that means if I comment the making of the threads and if I also comment threads.append, अगर हम दोनों को कमेंट कर दें तो भी ये प्रोग्राम सेम तरीके से काम करेगा. क्योंकि देखिए यहाँ हम क्या कर रहे हैं, जो थ्रेड ऑब्जेक्ट्स बनाते जा रहे हैं ना, उसको हम डंप कर रहे थे, कलेक्ट कर रहे थे इन अ लिस्ट कॉल थ्रेड्स. हाँ, बट इवेंचुअली उसको मैंने यूज नहीं किया है ना इस प्रोग्राम में. इस प्रोग्राम में आगे चलकर मैंने लिस्ट को कहाँ यूज किया है. हाँ, अगर आपको ऐसा लगे कि नहीं, मुझे इस लिस्ट को प्रिंट करके देखना है, आई वुड लाइक टू प्रिंट एंड चेक ऑल माय थ्रेड ऑब्जेक्ट, तो फिर आप आसानी से कर सकते हो बाय राइटिंग प्रिंट थ्रेड्स. लेट अस सी. हैव अ लुक. First the for loop ran. Now why worker 0 worker 1 is because you are passing some argument. No, this time to the worker method you are passing an argument I. So initially I will be 0, so I is going to go from 0 to 4, so num will also go from 0 to 4, and you're printing, no, the worker 0 worker 1 so on and so forth. But because every thread which we made was getting appended to the threads list, therefore I could notice that when I printed the list I got this kind of an output, जहाँ पर आप नोटिस कर रहे हैं कि आपके लिस्ट में थ्रेड ऑब्जेक्ट थ्रेड 1 है with so and so id, thread 2 bana with so and so id, and if you're wondering why is this word stopped coming, because all these threads have got stopped, no? Right, you, the last thread had just started when you actually printed, so if you notice all of the threads have got stopped except the last one. That means all threads went dead except the last one is yet not dead. जब ये स्टेटमेंट प्रिंट हुआ था ना, ये वाला स्टेटमेंट, तो लास्ट थ्रेड आपका डेड नहीं था. हाँ, इसकी इस प्रिंट स्टेटमेंट के बाद शायद वो डेड हो गया होगा, बट इस स्टेप तक वो डेड नहीं था. एंड बाय द वे, लास्ट के दो थ्रेड स्टार्टेड है या रन कर रहे हैं, या केवल लास्ट का थ्रेड रन कर रहा है स्टार्टेड है, ये हम लोग नहीं बोल सकते. एवरी टाइम वी रन दिस कोड वी मे गेट द लास्ट थ्रेड स्टार्टेड और वी मे गेट द लास्ट टू थ्रेड्स एज स्टार्टेड. दोनों पॉसिबिलिटीज है, राइट. सो this program also you all I hope have ran. Sonal, are you still getting the error or have you understood what mistake you made? Sonal, waiting for a response. Okay, yeah. Sir, I have a query. Yeah, this program, previous program or the, Sir, earlier one where it was showing the number. Sir, when you execute it, it is showing PID, sir. When we are printing the thread. this one on the screen? Look on the Yes, screen. sir. This one? Yes, sir. Mhm. So, what is 12328? Is the number. Which number? Which number are you talking about? Sir, 11672 14284. Oh, this one.
Thread Okay. one stop, yes, sir. This is the thread ID, no? The thread ID, because you printed thread object, no? You're dumping all the thread objects T into the threads list, and you printed the whole list. So when you print a thread object, you're always going to get the name of the thread, the status, whether it is running or stopped, and the thread ID. Unclear? Still unclear? Okay, sir. Right? Okay, Yeah. sir. Yeah. 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 Okay. So to the next piece of code, I want everybody to put little efforts. Effort is only this much. Can you tell me of how this program is working? I'll give you a complete start to this. We are making so many different thread objects. One is T, one is W, one is W2. The thread object W is bonded to the method myService. The thread object W is bonded to worker. Worker here, this one. And thread object W2 is bonded also to worker. You will say, how can you bind two to workers? You can, no? You can. The worker is basically an independent method. You can create n number of threads and all can be bonded to one single method. इसका मतलब जब आप T को जब W को स्टार्ट करोगे तब भी वर्कर कॉल होगा, W2 को स्टार्ट करोगे तब भी वर्कर कॉल होगा. This is what it means. Okay, so when I start W, I'm in short starting the worker method. I start W2, once again I'm in short starting the worker method. And if I start T, I am starting the my service method, this one. Okay, this is much flow I've given you. I'm giving you 1 minute to think. ये कोड का आउटपुट देखने के बाद आप खुद समझाओगे मुझे. आई एम अलॉटिंग दिस टास्क ऑफ एक्सप्लेनिंग दिस कोड to whom shall I allocate this task to? Would anybody volunteer? Dheeraj, would you like to take a turn on explaining how this code output comes? But first, Dheeraj, you will run the code. You can look on the screen how the output is coming. But please remember, it's more important that you all people run the code. आप कोलैब में रन कीजिए, कमांड प्रॉम्प्ट पर रन कीजिए, जहां भी करना कीजिए, लेकिन कोड रन जरूर कीजिए. So I'm waiting till most of you should finish. Sonali, when you can try to explain the code. So 1 minute for you all of you to run the code and then try and explain. But somebody of you has to explain. If you don't explain, I'll skip the explanation and go to the next code. So it's your choice. Okay. So that 1 minute time for all of you to run their codes is over. So Dheeraj, if you're on audio, please come online. Dheeraj, please come on audio. Yes. So Dheeraj, I'm very confident and I'm sure you would be in a position of explaining how this code is working. Please go ahead. एक रफ sketch दीजिए कि कोड कैसे काम कर रहा होगा, क्या हो रहा होगा.
जब आपने w डॉट स्टार्ट लिखा तो? जी, जब W dot start कॉल किया है तब it will first execute the W thread. So W is equal to threading dot thread and the name is worker. So it will the execution will go to the worker definition worker method. नो, नेम से फर्क नहीं पड़ता, इट्स टारगेट व्हाट मैटर्स। So टारगेट it's देखिए। a target. हम्म So after target goes to the worker function. हम्म करेक्ट। Then um, first uh, the first line executed that is the worker starting. करेक्ट, बराबर, वेरी गुड। So that is thread one is starting. परफेक्ट। Then we have sleep that is 2 milliseconds. That is waiting for 2 milliseconds. 2 seconds, 2 seconds. Millisecond is in Java, but Python is seconds. Okay. Hmm. Yeah. That is 2 seconds. Hmm. After that, W2 will get executed. Okay, okay, fine. So this thread is gone to sleep. Yeah, you're correct. Then I'll go W2. Yes, Yeah. perfect. Yeah. After that, W2 and which is having target worker. So again, it will go to the worker function. Hmm. Okay, so after that, will the output will be my service starting. नहीं, my service starting W2 में नहीं आ सकता ना। W2 W2 स्टार्ट में जो, क्योंकि इस थ्रेड W2 को हमने नाम नहीं दिया है, तो उसका जो डिफॉल्ट नाम है वो यूज होगा। हाँ, डिफॉल्ट नेम इज थ्रेड हाइफन वन। Okay, thread icon. वन इज द डिफॉल्ट नेम, थ्रेड हाइफन वन, थ्रेड हाइफन टू। अगर थ्रेड्स को आप नाम नहीं देते तो थ्रेड हाइफन वन, थ्रेड हाइफन टू नाम मिलते हैं उनको। ठीक है, Okay, okay. सो वो थ्रेड हाइफन वन। So that will be defaulting over or that will be starting. जी बिल्कुल। After that, again, it will go for the sleep method for 2 seconds. बिल्कुल And after that, key dot start will execute. So that is the key, and the target is for my service. So again, it goes to the my service function and it will execute that is the my service start. करेक्ट। And again, again it waits for the 3 seconds. And after that, simultaneous after that, thread that it is thread W, thread W2, and thread T will close. Correct. Absolutely. W will close first, then W2, and then T. Very good. Very good. I'm going to, Dheeraj, call you more often because this was excellent explanation. Trust me. It was very good. Right. So, friends, the way our friend Deepak or Vispita or Deepa are volunteering to come forward, so that interactive behavior is important, no? Because see, if you were offline, then I would have looked at your faces, you would have looked at my faces, and you would have spoken, interacted. Same applies here also. So little bit interaction from your side is needed, no? Otherwise, you keep hearing my voice continuously for 2 hours is so boring. One person's voice only coming. Hmm? ठीक है, and I also don't feel confident कि आपको समझ में आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है. So only when some people interact, I come to know, oh, okay, my pace, my audio, my explanation is going correct. ठीक है, सब लोग चलो रन कीजिए। अब कुछ लोगों ने रन किया है, लेकिन मुझे एक्नॉलेजमेंट किसी का भी नहीं आया। इस कोड को प्लीज, अगर आपने रन कर लिया है वर्कर माई सर्विस को, तो कर लीजिए। यू कैन से डन सर, और यू कैन से वर्कर डन, समथिंग लाइक दिस। Right. So moving into example number 4, I'll skip example number 5.
Okay. Example number 5 has a little reading work that has to be done, and I'm introducing you to a new module called login. A new module called login. Okay, right. But for little reading has to be done here, and I will request Sonal to please come on audio. Sonal, please come on audio. Yes, sir. Yes. Sonal, could you please read this entire comment for the FDB participants? A timer starts with its work after a delay and can be cancelled at any point within that delay time period. Okay, so it means the sleep which we're using till now is okay, but the timer is a little better object. Timer is a little advanced form of this. So if I ask you to explain this piece of a code, till now what we were doing, Sonal, was थ्रेडिंग के मॉड्यूल पर हम डॉट थ्रेड यूज करके थ्रेड ऑब्जेक्ट बना रहे थे. अब आप नोटिस करोगे कि हमने लिखा है थ्रेडिंग डॉट टाइमर, and I have written 3 here, and I have further written delayed here. Delayed is the name of a function. So what do you think? Uh, so if I say 3 means 3 seconds, what does this mean to you? क्या लगता है आपको, जो ओपन आपने कमेंट पढ़ा उससे क्या लगता है आपको, इसका क्या सिग्निफिकेंस होगा? So, after 3 seconds, it will be started. करेक्ट. जब आप थ्रेड T1 को स्टार्ट करोगे, वेरी करेक्टली सेड बाय यू, जब आप थ्रेड T1 को स्टार्ट करोगे तो 3 सेकंड के डिले के बाद वो डिलेड फंक्शन को कॉल करेगा. प्रीवियसली अगर आप थ्रेडिंग डॉट थ्रेड का अगर ऑब्जेक्ट बनाते तो वो इंस्टेंटली कॉल करता है जैसे ही आप स्टार्ट करोगे. बट यहाँ पर जब आप T1 को स्टार्ट करोगे, जो लाइन नंबर 19 पर हम कर रहे हैं, तो वो इंस्टेंटली डिलेड को कॉल नहीं करेगा, वो कॉल करेगा आफ्टर अ टाइम पीरियड ऑफ 3 seconds. So perfect, very good. Okay, now friends, let me explain to you the something little out of the way. Logging करके जो module है ना, usually whenever we use a logging module, we first have to specify the basic configuration of logging. That means हम जब log करते हैं, जो output print करते हैं, उसका format कैसे होगा? What is going to be the format for logging? So logging.basic config is going to show the output format of logging, in which we are telling that we first want the thread name and then we want the message. So please take this lightly. थ्रेड नेम को मैंने %s लिखकर 10 कैरेक्टर का स्पेस दिया है, और इस 10 कैरेक्टर के स्पेस में माइनस का मतलब होता है कि अपना जो आउटपुट होगा वो राइट जस्टिफाइड होगा. इट विल बी राइट जस्टिफाइड. So basically this plus and minus signs are used for justifying the output. 10 means total 10 स्पेस. अभी थ्रेड का नाम अगर T1 है तो T1 तो 10 कैरेक्टर का स्पेस नहीं लेगा ना, लेकिन हम एग्जैक्ट 10 कैरेक्टर के स्पेस में ही थ्रेड T1 को फिट करेंगे. तो अब वो लेफ्ट जस्टिफाइड होगा, राइट जस्टिफाइड होगा, दैट वी विल सी इन द आउटपुट बिकॉज ऑफ द माइनस साइन. हैव लिटिल पेशेंस, वी विल सी. वेरी वेल. ओके, सो आपने पहला टाइमर का ऑब्जेक्ट बनाया एज अ फ्रेंड सोनल एक्सप्लेन्ड, उसका नाम सेट कर दिया. दूसरा टाइमर का ऑब्जेक्ट बनाया, उसका भी नाम आपने सेट कर लिया. अभी T1 को स्टार्ट किया, T2 को स्टार्ट किया. इन शॉर्ट T1 के 3 सेकंड स्टार्ट अगर आपने अभी किया है, इस वक्त किया है, तो 3 सेकंड के बाद डिलीट कॉल होगा बाय T1. अब इस वक्त आपने स्टार्ट किया है, 3 सेकंड के बाद कॉल होगा डिलीट. नेक्स्ट, लॉगिंग डॉट डीबग इज सपोज टू बेसिकली प्रिंट, लेकिन लॉगिंग इज डिफरेंट देन प्रिंटिंग. इट आउटपुट लुक्स लाइक प्रिंटेड ओनली. अगर मैं इस कोड को रन करूं तो आपको लगेगा आउटपुट तो सेम ही है जैसे प्रिंट होता था, प्रिंट ही कर लेते थे आप. जी प्रिंट ही करता था, लेकिन डिपेंड करता है कि आप क्या प्रिंट करना चाहते हो. सी इफ यू वांट टू प्रिंट समथिंग विच इज टाइम बेस्ड, then you should not use print method. Instead, you should use log or logging.debug. This shows that you're logging the output on the screen for some testing or some debugging purpose. Anyways, मेरे को खाली logging.debug आपको सिखाना था, उसके लिए मैंने यहाँ डाला है. मेरा और कोई इंटेंशन नहीं था. I could have done by using print also. So अगर आप ये फील कर रहे हैं मुझसे पूछना कि आपने logging.debug क्यों यूज किया है, इसका क्या एडवांटेज है, कोई एडवांटेज नहीं. मुझे केवल आपको सिखाना था कि जब हम थ्रेड प्रोग्रामिंग करते हैं या टाइमर को यूज करते हैं, थ्रेड प्रोग्रामिंग में ही आता है टाइमर, तो you should not use print statement to print the output. It is not a standard practice in the industry. We always use logging.
to print our output. Okay, that's the reason I want to teach you. I had no other intention. Very well. लॉगिंग जब आप करते हैं, लॉगिंग मीन्स प्रिंटिंग ओनली, जब आप करते हैं तो आपके पास ऑप्शन होता है आउटपुट को फॉर्मेटेड करके दिखाना. So if you notice the output is quite formatted. Please notice in brackets you are writing the name of the thread and every matter is coming left justified because of minus sign. And last more important is you are having this entire space, you know, why this blank space is left out. Actually thread के नाम के लिए 10 कैरेक्टर का स्पेस बुक किया जा रहा है, तो 2 कैरेक्टर तो T1 ने खपा लिया, बाकी जो 8 कैरेक्टर की जगह बची है वो स्पेसेस से भर गई क्योंकि आपने -10 दिया था ना, तो माइनस की वजह से हमारा डेटा लेफ्ट जस्टिफाइड आता है. ओके, राइट. सो आई होप दिस इज गोइंग लाइक क्लियर. नाउ लेट मी एक्सप्लेन टू यू द टाइमर फंक्शन मेथड्स. ये देखिए, पहले हमने प्रिंट किया थ्रेड T2 का नाम, फिर हम 2 सेकंड के लिए वेट चले गए, वेट स्लीप पे चले गए, और फिर हमने क्या किया कि हमने लिखा है कि हम कैंसिल कर रहे हैं T2 को, और लिटरली कैंसिल भी किया 25th लाइन पर. तो जो टाइमर स्टार्ट हुआ था लाइन नंबर 15 पर, सॉरी 20 पर, 15 पर डिफाइन हुआ है, 20 पर स्टार्ट हुआ था. तो जो टाइमर को आपने स्टार्ट किया लाइन नंबर 20 को, वही टाइमर को आपने कैंसिल किया है लाइन नंबर 25 पर. आप सोच रहे हो यार इतना टाइम कैसे, इतने सारे स्टेप एग्जीक्यूट कैसे हो गए बीच में, क्योंकि टाइमर T2 जब आप स्टार्ट करते हो तो वो 3 सेकंड के बाद एक्चुअली कॉल करेगा डिलीट को. मतलब 3 सेकंड का टाइम है आपके हाथ में. ये जो स्टेप्स दिख रहे हैं ना आपको, ये तो माइक्रो सेकंड्स में एग्जीक्यूट होते हैं. सो माइक्रो सेकंड्स में आपके स्टेप्स एग्जीक्यूट होते गए फटाफट से. T2 डॉट कैंसिल पर जब आप पहुंचे तो 3 सेकंड नहीं हुए थे, उसके लिए T2 को हमने कैंसिल किया. सिंपल एज दैट. इफ यू नोटिस you can see waiting before cancelling T2, then cancelling T2, done. और जो आउटपुट में केवल आया वो केवल T1 के वजह से आया. सी सर ये लास्ट में क्यों आया आउटपुट, क्योंकि T1 का 3 सेकंड का डिले था, तो 3 सेकंड के बाद ये आउटपुट आया. अगर आप T2 को कैंसिल नहीं करोगे तो T2 का आउटपुट भी आपको आएगा T1 के बाद. Okay, now I'm holding for all of you to run your codes and please try for self analysis. If you have doubts, I'm sure you have, please ask. See, if you don't ask, I'm assuming you know everything. So please ask doubts if any. I'm holding for 1 minute. Patiently 1 मिनट में शांत रखूंगा, डिस्टर्ब नहीं करूंगा आपको. Okay, so I've got one acknowledgement on the chat that Rasmita has done it. What about others? Please, waiting for a few more acknowledgements. Rutuja also has done very good. Rutuja, would you be willing to re-explain this program very briefly for all of we friends and FDP so that हम लोग का एक revision हो जाए? Yes, Rutuja, I am asking you, would you be interested to explain this program very briefly? This like superficially कि क्या हो रहा है इस code में by coming on audio?
Why, Rutuja, no response from you? No, yes, no, no, neither in the chat nor on the audio. What is the problem? Hmm. Okay, so going on to the next program, friends. To run this program, write your observations. Now, in this, we are dealing with the consumer producer problem. Now, first, I'm going to explain to you the consumer producer problem. If the same code was written, trust me, if the same code is written in Java, you will write exactly double the line of code. Python is very compact. If you've written some code in 33 lines here, with the same code, with the same output, same functionality was written in Java, you would have consumed nothing than 70 to 80 lines of coding. Okay, same functionality. Chaliye. Let's have a look at what is producer consumer problem. Well, I'll keep it in a very simple way. Assume that this is a buffer space, buffer, B-U-F-F-E-R. This buffer could be quite great. Buffer could be like 100 character buffer, 1000 character buffer, 10,000 characters buffer, but I'm assuming for the sake of explanation that this is exactly a one character buffer. Only for the sake of explanation, I repeat, I'm assuming that this is only a single character buffer. अब ये अगर एक सिंगल कैरेक्टर बफर है तो नेचुरली एक सिंगल कैरेक्टर ही होल्ड कर सकता है. There are two threads, there is one here and one here. This thread I'm supposedly calling it as T1, and this thread on the right I'm supposedly calling as T2. So this thread T1, I repeat, this thread T1 says that it is adding one character or dumping or putting one character into the buffer variable. Let's say it puts a character called D. Now T1 has put one character. Please think what I'm saying now. अगर T2 ने ये कैरेक्टर को रीड नहीं किया और T2 के कैरेक्टर रीड करने से पहले अगर T1 ने एक और कैरेक्टर लिख दिया तो it is going to be but natural that D will be replaced with the new character which T1 is writing. T1 केवल काम कर रहा है writing का. T1 is doing the work of writing and he knows only to write or give an input. He's dumping the data. And T2 is capable only of T2 is capable only of reading. So T1 is writing, T2 is reading. So what I notice here is अगर T1 को मैं दो बार राइट करने दे दूं एक साथ बिना इसको एक भी रीड करने के लिए तो फिर ये D लॉस हो जाएगा. जो डेटा अभी D लिखा है वो लॉस हो जाएगा उसका, because that will be overwritten. नहीं, वैसा हमको नहीं चाहिए. अगर आपको ऑल्टरनेट बिहेवियर चाहिए कि ये एक बार राइटिंग करे और करस्पॉन्डिंग ये एक बार रीडिंग करे, वापस में ये राइटिंग करे ये रीडिंग करे, ऐसा अगर आपको करस्पॉन्डेंस वो काइंड ऑफ बिहेवियर चाहिए तो मुझे ऐसा लगता है कि हम लोगों को फिर ऐसा कुछ करना चाहिए कि आफ्टर वी हैव written this, the thread T1 should go to wait state. He should wait for this data to be consumed by somebody. But natural, T2 का काम रीड करने का है, T2 next रन करता है. So first person who ran was T1 for the purpose of writing.
and second, he immediately executed a wait over himself, and third, who ran was reading, and after reading was done, he will do the work of notify, where notify is a method which will notify to the person who's waiting for this buffer to get empty. Remember, T1 is waiting. Wait means waiting. Wait is the name of a method, but the wait method's objective is waiting for buffer to go empty. Okay, and how will he come to know when the buffer is empty? Okay, so whoever runs wait to wait for the buffer to go empty will actually get signaled. उसको सिग्नल मिलेगा कि बफर एम्प्टी हो गया है जब नोटिफाई रन होगा. सो T2 क्या करेगा, बफर से ये डेटा रीड कर लेगा. So buffer is gone empty and will notify. Remember, notify is not simply a blind call. Notify is a signal to the waiting thread. There is another method called notify all. So if you have more than two threads, if you have multiple threads waiting for a buffer to get free, then you will say notify all. Here it is going to be waiting for thread, waiting for thread. That is waiting for. So notify is actually notifying the one who is waiting for the buffer to get empty. So I hope you've understood this. And this goes on and on. खत्म. ये अब इसको नोटिफाई कर चुका है, राइट. अब वापस से T1 राइट करेगा बफर में और खुद वेट करेगा और ये रीड करके नोटिफाई करेगा. सिंपल. अब आप ये सोचते होंगे कि ये नोटिफाई तो कर रहा है और नोटिफाई का सिग्नल इसको जा रहा है, लेकिन ये भी तो सेकंड टाइम रीड नहीं करना चाहिए ना. मतलब अब अगर ब्लाइंडली T2 वापस जाकर सेकंड टाइम रीड कर लेगा तो कुछ भी नहीं मिलेगा, ब्लैंक मिलेगा. तो क्या करना चाहिए? The fifth step here is on T2 is he goes to wait now. तो ये जो वेट और नोटिफाई का सिलसिला है चलता ही रहता है, नॉन स्टॉप है. दिस गाइज गोइंग टू वेट नाउ, T2 इज गोइंग टू वेट नाउ, T2 इज वेटिंग कि उसको भी नोटिफाई करे. T1 जब राइटिंग करेगा, अब T1 क्या करेगा? सिक्स स्टेप पर वो राइटिंग करेगा. W मीन्स राइटिंग. अब वो राइटिंग करने के बाद पहला काम वो करेगा वो होगा नोटिफाई. वेट बाद में करेगा. वो पहले वो नोटिफाई करेगा, नोटिफाई का सिग्नल इसको जाएगा और खुद 8 स्टेप खुद T1 वेट पे चले जाएगा. So this sequence of steps of waiting, notify will go on now. Now it is an endless cycle. So in this case, this guy called T1 who's producing data becomes a producer, and this side on this side who's reading the data continuously becomes a consumer. So you have a producer, you have a consumer. Producer wants to produces the data, consumer who consumes the data. Now how do you put it to implementation code? Code such a complex thing in very short and sweet manner. We have to know one more class from a threading module, and it is called as a condition class. Condition class is actually a superior class to locks. लॉक के ऊपर कंडीशन आता है. जो काम लॉक करता है वही काम कंडीशन भी करता है. बट लॉक क्या होता है? लॉक ऑब्जेक्ट पर कोई भी अक्वायर रन कर सकता है और कोई भी रिलीज रन कर सकता है. अक्वायर टू अक्वायर द लॉक, रिलीज टू रिलीज द लॉक. इन शॉर्ट, अगर आप वर्ड लॉक को भूल जाएं या वर्ड लॉक को इग्नोर करें तो मैं कहूँगा आप रिसोर्स को अक्वायर कर रहे हो, आप रिसोर्स को रिलीज कर रहे हो. रिमेंबर, लॉक हमेशा रिसोर्स के ऊपर रहता है, चिपका हुआ रहता है उसको. सपोज ये रिसोर्स है आपका, तो ये लॉक जो है उस रिसोर्स पर चिपका हुआ है. जब कोई बंदा कहता है आपको लॉक को अक्वायर करो, दैट मीन्स ही वांट्स टू से कि आप रिसोर्स को अक्वायर करो. रिलीज करो लॉक को मतलब आप रिसोर्स को रिलीज करो. एज सिंपल एज दैट. नाउ लॉक से एक लेवल सुपीरियर है कंडीशन. कंडीशन ऑब्जेक्ट भी एग्जैक्टली वही काम करते हैं जो लॉक करता है, लेकिन कंडीशन एक कंडीशनल लॉकिंग सिस्टम है. देखो, लॉक में आप ब्लाइंडली अक्वायर और रिलीज कर सकते हो बिना वजह. यहाँ आप बिना वजह ना अक्वायर कर सकते हो ना बिना वजह रिलीज कर सकते हो.
तो इस कोड को समझने में थोड़ा समय लगेगा। कोड बड़ा कॉम्पैक्ट है, लेकिन जो फ्लो हो रहा है इंटरलिंकिंग जो, वो काफ़ी ज़्यादा है। मैं विस्मिता को रिक्वेस्ट करूँगा कि विस्मिता, after I finish my explanation of my code, please do take the pains to re-explain it to all our participants so that a kind of double revision हो जाए. Would you help me with that? Yes, sir. Right? Thank you. Yes, sir. Yes. Right. So looking at the initial part, because we're importing logging, so logging.basic config has been set. Okay, so you can ignore this because I could have done this by using print statement also. Okay, अब मेरे पास दो methods हैं. One is consumer, other is producer. और दोनों methods क्योंकि synchronize रखने हैं हमें एक दूसरे के साथ, इसके लिए we are passing to both of them an object of type condition. That COND is nothing but a condition object, or you can say a lock object. Condition is superior to a lock. I think somebody's audio is on. You can please turn off your audio. Vispita, you can turn off your audio. Thank you, sir. I'll call you when I call you after my explanation. That time you come to audio. ठीक है. So पहले हम देखते हैं 24th लाइन को. कंज्यूमर प्रोड्यूसर के अंदर मत जाइए प्लीज. 24th line says threading dot condition. You made a condition object which is dumped here. I have made a thread जिसका टारगेट है कंज्यूमर, और आप उसको एज आर्ग्यूमेंट एक कंडीशन ऑब्जेक्ट पास कर रहे हैं. कंडीशन ऑब्जेक्ट को मैं बहुत वापस सिंप्लीफाइड तरीके से कहना चाहता हूं कि कंडीशन ऑब्जेक्ट इज नथिंग बट अ लॉक ऑब्जेक्ट, बट इट इज लिटिल सुपीरियर टू अ लॉक. So I will use the word lock on for some time. So the C1 is actually a consumer who is having a lock object. C2 is also a consumer, and even he is having a condition or a lock object. Okay, P stands for producer. P stands for producer, where this producer is name, sorry, forget the name. This producer is, so the P is a producer and even he is having the lock object. So अभी आपके पास सिचुएशन ऐसी है कि प्रोड्यूसर एक है और कंज्यूमर दो है. That's okay. I can have one producer and n number of consumers. That's okay. It's called as a broadcasting model. One person is speaking, others are listening. So I'm the producer of data, you're the consumer of it as of right now. So C1 को आपने स्टार्ट किया, you started the first consumer. C2 को स्टार्ट किया, started the second consumer. I hope both of us will mutually agree that how many ever consumers I start, till a producer is not started, data will not be produced. And if data is not produced, then naturally consumers cannot consume it and they will actually invariably remain in the wait state. So the consumer C1 started, you purposefully created a delay of 2 seconds. C2 started, another delay of 2 seconds. मतलब C1 in short 4 सेकंड वेट कर चुका है, C2 in short 2 सेकंड वेट कर चुका है. अब प्रोड्यूसर कुछ डेटा प्रोड्यूस करता है. अब जैसे ही प्रोड्यूसर डेटा प्रोड्यूस करेगा, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जो एक इंटरनल क्यू है, मैंने कुछ देर पहले बताया था, और क्यू इज मेंटेन्ड by Python for all the waiting threads. So these are our consumer threads, where in the top of the queue we have C1, the next in the queue we have C2, and both of these consumer threads are actually waiting for a buffer space to get filled up. As an example, जैसे ही buffer space fill up होगा, the Python virtual machine will actually allow the consumer C1 to first consume and then the consumer C2 to consume. So both have to wait. The question is, how are both going to be notified? See, notify will notify only the first person in the queue. That is only C1. Now हमको दोनों को notify करना है. Notify all use कीजिए. Notify all is going to notify to all the people waiting in the queue. So both the consumers are going to be informed.
ठीक है, आई होप दिस मच पार्ट ऑफ द कोड इज क्लियर, एटलीस्ट पार्शियली क्लियर। डाउट्स हो गए, बट आप पूछोगे तो ही मैं बोल पाऊंगा, बिना आप पूछने के बिना मैं नहीं कुछ बोल पाऊंगा। ओके, नाउ जस्ट लेट मी टेल यू, C1 को आप स्टार्ट किए मतलब आप कंज्यूमर फंक्शन को स्टार्ट किए, तो कंज्यूमर फंक्शन यहाँ है। So as regards the consumer function, this is just a printing statement, you can ignore it. Okay, आपने जो थ्रेड ऑब्जेक्ट बनाया है उसका सारा रेफरेंस आप वेरिएबल टी में लेके आए, वेरिएबल टी में आप लेके आए। अब आप चेक कर रहे हो विद कंडीशन, सी मैंने विद ब्लॉक ओपन किया है, तो अगर कंडीशन लॉक या कंडीशन लॉक जो भी आप कहो, पहला हम चेक कर रहे हैं कि कंडीशन ऑब्जेक्ट है हमारे पास या नहीं। विद कंडीशन विल चेक डू आई हैव अ कंडीशन ऑब्जेक्ट, यस आई डू। हम अंदर गए, कंडीशन ऑब्जेक्ट पर हमने सीधा वेट एग्जीक्यूट कर दिया, मतलब कंज्यूमर ने कुछ ना दाएं देखा ना बाएं देखा, ना चेक के डेटा है बफर में नहीं है, कुछ नहीं चेक किया, सीधा उसने बोला कंडीशन को वेट करो, मतलब लॉक को वेट करो। कहता है वेट वेट, जब तक आपको नोटिफाई ना करे आप वेट करोगे, ठीक है। अब लाइन नंबर 14 पर कोड रुक जाता है, कंज्यूमर का लाइन नंबर 15 रन ही नहीं कर सकता। मैं वापस दोहरा रहा हूं, 14 15, ये जो लाइन नंबर 15 आप यहां देख रहे हो लॉगिन डॉट डीबग, ये रन हो ही नहीं सकता, क्योंकि लाइन नंबर 14 पर कंज्यूमर को हम लोग वेट स्टेट में डाल देते हैं, वी आर पुशिंग हिम टू द वेट स्टेट, वी टेल हिम प्लीज वेट करो, आगे मत बढ़ो, वेट करो, वेट करो, आगे मत बढ़ो। ठीक, कंज्यूमर बोलता है भैया ठीक है हम वेट करते हैं, आपने हमको वेट करने के लिए कहा। अभी अब हम चलते हैं कि सेम स्टोरी होगी C2 की भी, यू सी। सो C1 एंड C2 दोनों सॉरी C1 एंड C2 दोनों स्टार्ट हुए और दोनों का ये सिचुएशन आएगा कि दोनों का ये लाइन ऑफ कोड एग्जीक्यूट नहीं हो पाया, 15 लाइन एग्जीक्यूट नहीं हो पाया, तो 14 पर आके वो रुक जाते थे। ठीक है, अब आपने P को स्टार्ट किया, मतलब इफेक्टिवली आपने प्रोड्यूसर को स्टार्ट किया। अब प्रोड्यूसर क्या कर रहा है, प्रोड्यूसर भी चेक करता है कि मेरे पास सेम कंडीशन ऑब्जेक्ट है, जी बिल्कुल है, तो वो ये लाइन प्रिंट करता है और वो नोटिफाई ऑल करता है। नोटिफाई ऑल का मतलब हो गया कि जितने कंज्यूमर्स इस प्रोड्यूसर के लिए वेट कर रहे थे वो सारे के सारे आगे बढ़ सकते हैं। आई रिपीट, जितने कंज्यूमर्स इस प्रोड्यूसर के लिए वेट कर रहे थे वो सारे के सारे आगे बढ़ सकते हैं। अब तो आगे बढ़ने का मतलब क्या होगा, उनका कंज्यूमर का 15th लाइन प्रिंट होगा दोनों कंज्यूमर्स के लिए, C1 के लिए भी एंड C2 के लिए। रन करके दिखाता हूँ, प्लीज देखिए विद पेशेंस। अब मैं आपको समझाता हूँ आउटपुट आया कैसे। पहले जब आपने C1 को स्टार्ट किया तो ये वाला आउटपुट आया है, C1 स्टार्टिंग कंज्यूमर थ्रेड, ये क्योंकि हम टाइम स्टैम्प प्रिंट कर रहे हैं ना उसके लिए वो ऐसा आ रहा है। C2 फिर स्टार्ट किया तो ये आउटपुट आया। 15th लाइन था रिसोर्सेज अवेलेबल फॉर कंज्यूमर, लेकिन ये प्रिंट नहीं हो पाया क्योंकि प्रोड्यूसर अब तक पिक्चर में नहीं आया था। जैसे ही प्रोड्यूसर स्टार्ट किया एंड प्रोड्यूसर ने 2 लाइन अपना प्रिंट किया, प्रोड्यूसर खत्म हुआ, वैसे ही कंज्यूमर C1 एंड C2 रन हुआ। C1 पहले क्यों, क्योंकि C1 पहले है क्यू में, C2 बाद में क्यों, C2 सेकंड इन द क्यू। आपको वापस रन करके देखना है, चेक कर लीजिए। अब देखिए क्या हुआ, C2 C1 आया। सर ऐसे कैसे हो सकता है, बिकॉज पहला तो C1 स्टार्ट हुआ था तो पहला C1 क्यू में आना चाहिए फिर C2 आना चाहिए। बिल्कुल, प्रॉब्लम क्या होता है पाइथन में ये प्रॉब्लम नहीं है, मतलब ये हमारे लिए ऐसा लग रहा है हमें प्रॉब्लम है, लेकिन पाइथन इज ओके विद इट। पाइथन से जब आप मुझे नोटिफाई ऑल करने को कहोगे तो आई विल नोटिफाई ऑल द वेटिंग थ्रेड्स। मैं ये नहीं देखूंगा कि पहले कौन है क्यू में, सेकंड कौन है, मैं नोटिफाई करूंगा। अब जैसे ही उसने नोटिफाई किया ऑल थ्रेड स्टार्ट रनिंग, तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम कहा मैंने, पाइथन नहीं कहा, ऑपरेटिंग सिस्टम जिस थ्रेड को पहले शेड्यूल करेगा
ऑन दैट स्पॉट वो थ्रेड पहले रन हो जाएगा। सो इसके लिए जब आप नोटिफाई ऑल करते हो तो ध्यान रखा जाए कि कोई गारंटी नहीं है सीक्वेंस की कि मेरा C1 रन होगा या C2 रन होगा, बिकॉज बोथ आर इक्वली वेटिंग फॉर द प्रोड्यूसर टू प्रोड्यूस डेटा। जैसे ही प्रोड्यूस हुआ कोई भी एक कंज्यूमर रन करके बैठ जाएगा पहले, रन सब करेंगे कंज्यूमर्स, लेकिन किस सीक्वेंस पर रन करेंगे वो हम लोग नहीं बोल सकते। ठीक है, राइट। अब मैं आप लोगों को 1 से 2 मिनट दे रहा हूं अपना सेल्फ गो थ्रू करने के लिए। बसमिता, बिकॉज आपने वॉलंटियर किया है हेल्प करने के लिए, आप जब रेडी हो तब आप मुझे ऑडियो पर रेस्ट करिए, हम फिर एक्सप्लेनेशन री एक्सप्लेनेशन स्टार्ट कर सकते हैं। आई होप बाकी सब भी कोड को रन कर रहे हैं। ऐसा इंप्रेशन है मत रहिए कि अरे हमारा एक्सप्लेनेशन का टर्न नहीं है तो हम क्यों रन करेंगे। रन सबको करना है कोड्स को। बसमिता के लिए हम सब वेट करते हैं, जब वो रेडी हो जाए कोड एक्सप्लेनेशन देने के लिए तब हम विल इनवाइट हर। Yes, यू I'm रेडी? ready. राइट, प्लीज गो अहेड। स्टार्ट फ्रॉम द 24th लाइन। Okay, sir. Fine. We are using a lock called as condition. करेक्ट। C1 is equals to threading dot thread. So name of the lock will appear. Target is equals to consumer. So consumer thread will come into picture. So you're making a consumer thread. Very good. Yes. Then whatever condition we have given, that lock is given. So its argument is going to be get printed when it will run. Okay. Okay. C2 again is a lock which is equals to threading dot thread. Its name again target is consumer and again its arguments. Hmm. Hmm. P is the producer as we have defined the consumer and producer up in the code. P is a again object of lock. I can say that is equals to threading dot thread. Name is equals to P. Target is produce. So arguments again are a log condition. Okay. So you have got coming three threads. So you've got 3 threads now: 2 consumer and 1 yes, producer. yeah, two consumers and one producer. And all the 3 are synchronized on one object of condition. Yes, on one condition. Correct. Correct. Right. The 29th line says that C1 dot start. As soon as C1 dot start is done, the thread of C1 will start executing. We will come to where we have defined consumer. So it will start executing logging.debug. It will give you starting consumer thread. Then T is equals to threading dot current thread. So it will print starting consumer thread for C1. Then it will check with the condition. Here we have written condition dot wait. So here it's not going to get executed anything. So this line of code logging.debug is not going to get executed unless and until producer is not going to come up. Perfect. Perfect. Good. Good. Then we go to after this we go to C2 dot start. Now thread C2 is starting. It will start again. It will go to consumer. It will see
the first lines of code, it will execute that code and it will say C2 is starting consumer thread. Mhm. That will be going to get started, and then it will come to the condition with condition where we have set C2 to wait. So again, logging.debug statement will not get printed unless and until producer is not coming into picture. Perfect. Then we are going to have producer. Now producer thread is started, Hmm. and we go to where we have defined a producer, the block of code. Condition is equals to threading dot condition C1, name of C1 consumer, target is consumer. So when we are seeing this code at the last line, 27th line, P is equals to threading dot thread, name is equals to P, target is producer, and argument is condition. That is nothing but log. Hmm. Now when P started at that time, we will go to P producer logging dot debug starting producer thread. This will get printed out. Hmm. Then it will check with the condition log. It will print the statement logging dot debug making resource available. Then it will notify C1 and C2 who are there in the queue. So they will go and print the statements of C1 and C2. Hmm. Absolutely. And you will get as when the producer started and producer is making available of the resources, it will print C2 will print resources available to consumer, C1 will print resources available to consumer. For one last question, you have answered beautifully well. One last question: is there any guarantee that my producer is going to notify the consumers or the waiting threads always in sequence, or it could be out of sequence? Sir, as they are in queue, everyone will get notified. Hmm. So there is nothing like who is going to be the first one to be printed out. Okay. So So that you means can have different types of sequence also. okay. So that means at times I may get C1, C2, at times I may get C2, C1. Yeah. परफेक्ट नोटिफाई सबको होगा बिल्कुल सही कहा आपने लेकिन किस सीक्वेंस से वो रन करके अपना आउटपुट देंगे वो हम नहीं बोल पाते पाइथन कैन नॉट से दैट दैट डिपेंड्स अपॉन Yeah. ऑपरेटिंग सिस्टम हाउ इज बीइंग शेड्यूल्ड वेरी गुड Yes, sir. राइट Yes, राइट sir. वेरी गुड थैंक यू विस्मिता Thank you, sir. yes so friends now Vismita has explained the code once again also very well but still if anybody has a doubt please ask me because this is the last program of the chapter we're going to wind up with this chapter and we're going to go back to classes and object programming तो अगर कोई डाउट आपका छूट गया है चैप्टर में शायद मेरे मेरे टॉपिक से ना हो आपको और कुछ पूछना है आप प्लीज यू कैन कम फॉरवर्ड टू आस्क आई एम वेटिंग फॉर 1 minute huh your doubt I may take 10 minutes to solve but I am waiting for 1 minute for you to raise your doubt to raise your question So, yes that I'm having doubt in the earlier program where yeah we have first taken first W, first first of W2 all and yeah D. yeah actually first of all tell your name no how do I come to know who is speaking So this is Sonal. yes sir fine so should I delete this program should I go to the previous program Sir, should I share my screen? okay okay I'm unable to understand my output. okay sure please go ahead share your screen This is, so I'm talking about this program. but it's coming hold on yes it has come now please पूछिए बताइए I'm talking about this program where we have W, W2 and T. या सो क्या आपको कंफ्यूजन क्या है हाँ बताइए सर इसको जब रन कर रहे हैं sir why I'm getting W workers then T services and after that I'm getting starting. So Sir first of all, W no, workers from first of all, starting hold on. You are not supposed to run. I don't know on who on earth has told you this.
why are all of you guys running your program in the shell? Shell is meant for running a single line script, not a program. Okay, okay. You have seen my screen from Tuesday onwards. I have been running on Yes, a command prompt. Have I ever run on shell? no, sir. Then Okay, okay. this is a So, disaster you people are doing. So two people did a disaster in the morning. Now you're also doing the same thing. so So sir, you have whenever to. we are doing a thread, then we have to use No, no, Solar, not thread. Any program you write, more than one line program if you write, you have to run your codes in a command prompt. You are running a script. See, shell is meant for running one line command, not for running a script. ये एक file है ना? Tell me one thing. Is this a individual line program or is this a file? First tell me that. sir, it's the file. Correct. So whenever you want to run a file, you have to start your command prompt and run from there, or you can copy paste the whole code into a Colab or a Jupyter cell, and you can run the whole cell. So whenever you in shell, what you should do, you should only run one line commands. Example print या substring ऐसा कुछ एक line command test करना है तो shell खोलो test कर लो. Okay, okay, sir. Hmm. That's why the error is yes, Right, sir, right. getting. Okay. So because earlier other programs get executed properly on the shell. Only this the No, no, no. multi-threading or Shell is meant to execute only one line of program at a time. okay, sir. Okay, Hmm? sir. Hmm, Okay, hmm, sir. hmm. Yes, Yes. thank you, sir. Yeah. Yeah. Thank you so much, sir. सर ये डाउट कभी भी क्लियर नहीं होता था इसको दैट आई वुड हैव शेयर दिस Right. But today morning, Dheeraj and Deepa had shared the same problem. They shared the screen also. I told them, you were there in the morning? यस सर सर बीच बीच हाँ में डिस्कनेक्ट हो रहा था सो हाँ माइट हाँ हैव हाँ. टेक Right, दैट right, right. पार्ट No problem. No problem. चलो, ठीक थैंक है. यू सो मच Sure, sure. Okay, so now I would request all of you to please come on the session 1. I have a request to everyone. Please come on the session 1. सेशन 1 का अपना वर्क स्पेस फाइल ओपन अप कीजिए और सीधा इस एग्जाम्पल के पास आइए. स्ट्रेट सर्च एंड कम टू दिस एग्जाम्पल जो मैंने बोर्ड पर अभी आपके सामने हाईलाइट किया है. It goes as implementing the abstract data type fraction. और जब इस कोड पर आप आ जाए चैप्टर नंबर 1 में आप रेडी हो तो आप मुझे कहोगे रेडी ऑन द चैट. फिर मैं आगे बढ़ता हूँ. So Dheeraj is ready, friends. SK Shukla is ready, friends. Come on, waiting for few more acknowledgements to come. Few more people should also get ready so that we all can move on together. Okay. So it seems many people are ready. So I think I can proceed. Okay. I was eager to do this project on the very first day also. But because we started 20 minutes late, if you recall, because of Cisco WebEx problem, and chatting couldn't be done with you all people, so this topic got left out. But I had decided that time also that मुझे जब time मिलेगा मैं इस topic को attack जरूर करूँगा. Okay.
Now, why this is important is because whenever you want to implement any abstract data type, I'm very sure that all of you know what an abstract data type is. So data types वो होते हैं जो प्री डिफाइंड हो किसी भी लैंग्वेज में, और एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप वो होते हैं जो उस लैंग्वेज में डिफाइन नहीं है, आप डिफाइन कर रहे हो एज अ प्रोग्रामर, एज अ यूजर। एग्जांपल देते हैं, मैं मान के चलता हूं कि मेरे ऑडियंस को पाइथन के अलावा ये 3 लैंग्वेजेस में से कोई एक लैंग्वेज भी पता है। आई रिपीट, मैं अज्यूम कर रहा हूं कि मेरे ऑडियंसेस को एफडीपी में, द एआईसीटी स्पॉन्सर्ड फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम में, पाइथन के अलावा सी, सी प्लस प्लस या जावा, इनमें से कोई एक लैंग्वेज की भी जानकारी है। सो in all of these languages, if I write this term in front of you, I haven't to really even speak. You will yourself say this is an integer, you want to declare an integer variable. Finish. But if I say that I want to represent a number like this, then how will you do it? You will say like this number, matlab 2 divided by 7. So you can store. No, what is a harm? No, you cannot. You cannot. If I make a variable b and I assign it 2 divided by 7, it is literally going to divide 2 by 7. And then whatever is the answer of 2 divided by 7, that is going to get stored. I repeat, that is going to get stored in the variable b. So we don't have any intention to store 2 divided by 7. No, I don't want a floating answer. I don't want a floating answer. I want a fraction to be stored as a fraction. Think of school mathematics. Children are not supposed to use calculator in school, right? So they deal with fractions as fractions. They deal with fractions as mixed fractions also. So have you ever imagined how in coding will I implement a fraction? There is no ready-made class, whether it's C, C++, Java, and very similarly, even if it's for that reason Python. There is no ready-made data type to hold a fraction. That gives you a hint, that gives you a kick that yes, if I want to hold a fraction which I see in real life, then I should code a class called fraction and make its object and start using it in Python. So when I make a class in Python called fraction, which already exists in real world, see real world में तो fraction exist करता है ना यार, but Python में नहीं है, C में नहीं है, C++ में नहीं है, Java में नहीं है. So something which exists in real world, some concept which exists in real world, but it doesn't exist in a programming language, and you want to bring it, then what you're coding or what you're doing is coding an abstract data type. As simple as this. Okay, so I hope this is going simple. So we are going to code an abstract data type which will work ditto like a fraction. Let's see how. So let me look at the version 1 of this code. Init is my constructor. So to make a fraction, obviously I will have to assign the numerator, I will have to assign the denominator. Further, I'm making an object of fraction giving 2, 7. It's understood 2 will be the numerator, 7 is going to be the denominator. And then you're printing the fraction object. When I print any object, it is not new for all of us that it won't print the content of the object, it's going to print the address of the object. ये बात हमारे लिए कोई नई नहीं है. We're very used to this fact कि अगर हम कोई भी ऑब्जेक्ट बनाते हैं और उस ऑब्जेक्ट को प्रिंट करने जाते हैं तो वो हमेशा उसका एड्रेस प्रिंट करता है, उसे कंटेंट प्रिंट नहीं करता. Oops.
रॉकी जी मुझे तो ऑब्जेक्ट का कंटेंट प्रिंट करना है, मुझे क्या लेना देना ऑब्जेक्ट के एड्रेस से। बिल्कुल सही। सो इसके लिए इस प्रोग्राम को इंक्रीमेंटल तरीकों से वर्जन्स में एक्सपैंड किया गया है। लेट्स सी व्हाट we're doing next. The next thing, I'm adding a few methods to print the object as a string. I don't want to print the object as an address, because if you print the object as an object, it's always going to print the address. So I want to print the object such a way that its contents get printed. I'm adding a few methods to my class fraction. Apart from the constructor, I've added a function called show and a function called underscore underscore str. So I'm deleting show in front of you because, to be honest, it's not needed. And as all of you have already learned on the session classes and object programming, that in Python we have something called as magic methods. So underscore underscore str is a magic method. When I say something is a magic method, that means it's going to be automatically called. Even init is a magic method. So in short, any method which precedes with underscore underscore is a magic method. So why do you call this magic? Right. Why do I am calling it as a magic? Interesting question. I'm calling it as a magic because, to be very honest, I haven't to call it specifically. Tell me one thing. In line number 9, everybody knows that I'm calling, or rather, I'm making an object of a class fraction. I'm making the object of a class fraction, but am I specifically calling in it? दिख रहा है आपको अपने आंखों से कि we are calling in it? No, we don't. From the eyes is not visible. No, I don't see with my eyes that I'm calling in it. But call is going to in it only, no? So methods which are invariably called, inherently called, automatically called, are called magic methods. Same thing happens here. When you print the object and the print statement, it automatically calls the str function. I repeat the word, it automatically calls the str function, due to which the object gets printed in a more decent way. So instead of looking at the address of the object, I will prefer to look at the content of the object. So that's what the beauty is. So 2, 5 is per se getting properly printed as numerator concat with a slash with a denominator. Okay, I'm expanding the program a little more further. Suppose if I'm eager to compare the two fraction objects, I made two objects here. One is x holding 1 by 3, another is y which is also holding 1 by 3. अब सुपरफिशियली देखने पर ऐसा लगता है हम सबको कि दोनों ऑब्जेक्ट्स तो सेम ही है। हाँ, सेम तो है, सेम तो है, लेकिन जब आप इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को इक्वालिटी ऑपरेटर से कंपेयर करने जाओगे तो ये आपको आंसर फॉल्स देगा। क्यों? क्योंकि by simple rule, the equality operator of the object is supposed to check the address in x with the address in y. So address in x and the address in y which is supposed to be checked, वो हम चेक कर रहे हैं, but address तो दोनों का अलग अलग है, क्योंकि दोनों ऑब्जेक्ट्स तो अलग अलग बनाए गए थे ना। So address of x is different, address of y is different, and therefore when you compare them together, they give you an answer as false. Let me show you. आपने ये तो एक्सपेक्ट नहीं किया था ना कि दोनों ऑब्जेक्ट्स और दोनों फ्रैक्शंस की कंटेंट सेम है। Imagine you are doing simple mathematics, and in math somebody is asking you, is this fraction equal to this fraction? What's going to be your answer?
ऑब्वियसली यस। क्यों आपने यस कहा? सर बिकॉज मैंने 1/3 कंपेयर किया 1/3 के एग्जैक्टली। आपने 1/3 का एड्रेस 1/3 के एड्रेस से कंपेयर नहीं किया, आपने एक्चुअल कंटेंट कंपेयर किया कंटेंट के साथ। उसके लिए आप कह सके कि आंसर यस है, ट्रू है। इसका मतलब इस फंक्शनलिटी को भी इंप्लीमेंट करने के लिए हमें एक मैजिक मेथड की जरूरत पड़ेगी, बिल्कुल पड़ेगी। और ऐसे बहुत सारे मैजिक मेथड्स हैं। सो अगला जो मैजिक मेथड है, जो नया मैजिक मेथड यहाँ पर आ रहा है, वो है अंडरस्कोर अंडरस्कोर इक्वल। वी आर ट्राइंग टू चेक द इक्वालिटी। अब जैसे ही आप ये इक्वालिटी ऑपरेटर यूज करते हो लाइन नंबर 20 पर, instantly, I repeat my words, instantly call will go to underscore underscore equal, which says that this is some expression, which this is some code which I have written, which I'm going to explain to you in depth. Please don't worry. But before that, let me explain to you that on the left of the equality operator, whatever you write, whichever object you write, that is the one who is calling the method. So technically speaking, if you understand, trust me friends, if you understand one magic method call correctly, you understand every call correctly. So when you're writing x is equality operator y, and because you have coded the magic function underscore underscore equal, therefore it is as good as writing like this: x dot the magic method and the parameter passed is y. So whatever is written on the left of the equality operator becomes the caller of the object, and whatever is written on the right becomes becomes the past object. Whoever is the caller of equal method, we all know from day one that its reference is going to go into self, and whatever you have passed, we are dumping its reference in the variable other. Have a look here please. Self gets x, other gets y. Now you know what we're doing. Supposedly if I'm asking you to tell me, is the fraction 1/3 same as a fraction 1/3? Keep your eyes closed. I repeat my words, keep your eyes closed. Don't use your brains. 1/3 is equal to 1/3. Arey, this is same. Your brains are saying it is same. How would you say it in coding? Coding will work like this. Coding will say, let me do cross multiplication. If the this is the x now, this is the x, so it has gone into self, and the parameter on my right is y, which has gone into other. So what I'm doing is self dot numerator into other dot denominator. Self dot numerator is 1, other dot denominator is 3. I'm doing cross multiplication of these two, which is going to give me 1 into 3. Okay, and the other expression is going to be self dot denominator, that is 3, into other dot numerator, which is 1. Answer of this is 3. Answer of this is 3. Now ask yourself, are they equal? And you will always get your answer as true. Yes, they are. So that's what I did here. This is what we should do in school days. I'm just translating a 4th standard CBSE math book into a program here.
मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं ट्रांसलेट कर रहा हूँ। फोर्थ स्टैंडर्ड का सीबीएसई का मैथ्स का बुक आप देखिए, आपको फ्रैक्शन शुरुआत होती है, दो फ्रैक्शंस को ऐड कैसे करना है, उनका एलसीएम कैसे निकालना है, वगैरह वगैरह वगैरह, उसको आप ट्रांसलेट कीजिए कोड में। इट्स ग्रेट फन। वही मैंने किया है आपके सामने। सो self dot numerator into other denominator, 1 into 3, 3, 3 into 1, 3. I'm checking, is first num equal to second num? Is this 3 equal to 3? Yes, it is. So true is our return value. True, therefore print prints true. Let me show you. Right? It makes sense, right? Okay. Now, because I've understood all this stuff very clearly, I think I have the full right to ask you that if I were to, I'm going to the last piece of code for today, version 4, overload the built-in method to add two fractions. I'll remove the unwanted method, show is not needed. I'm not even interested much what is inside the add functions code. I'm not much interested. What I'm interested is that one of you should come forward, okay, and please tell me a very simple point which I'm asking you. आपने यहाँ पर जो लिखा है, this line of code, line number 20. F fraction, F1 is the first fraction 1 by 4, F2 is second fraction 1 by 5. So F1 plus F2, so among these two fractions, which goes into self, which goes into other fraction? Who will quickly come forward to tell me? Vispita, can you please quickly come forward to tell me on this? Yeah, Vispita, are you around on the network? No, not there. Okay. Deepa Jain, are you around on the network? Yes, sir. Yes, yes, yeah. So, Deepa, I wish to ask you, because we're using the plus method here, so obviously we are invoking the add function, the add magic method. So I want to know, this add magic method is being called by f dot 1 because वो left में लिखा हुआ है, and the parameter being passed is always on the right. So f2 is being passed as a parameter. So who Yes. is now, my question is, who is now going to come into self and who is going to go into the variable other fraction? F1, F underscore 1 will come. So 1 will come into the self and 4 will come into the other. Acha, f1, the fraction f1 is going to come into self and the other fraction is going to Yes. go into, f2 is going Yes, to go to sir. other fraction. Right now, यही बोल रहे थे Yes, ना? sir. Yes, sir. Yes, yes, हाँ. yes. Okay. So in that case, 1 by 4 has come here and 1 by 5 has come here. Yeah. Right? ठीक है. Yeah. Okay, okay. Now tell me one thing. When you add two fractions, let's say this is two fractions, 1 by 4 plus 1 by 5. Imagine you are not aware about LCM and HCF on all this funda, आपको कुछ नहीं मालूम, आपको केवल ये दो fractions add करना है. What is the simplest way of doing it? You remember school maths? Yeah, not remember that much. Not remember that much. Okay, okay, okay. Right. So, these two are going to get cross multiplied. So 5 and 1 will get cross multiplied. So it's going to be 5. 4 and 1 cross multiplied will become 4. So I'll do 5 plus 4 divided by multiplication of 4 into 5, which is 20. Yes, sir. याद आ रहा है ना 20. अभी? So इसका Mm-hmm. आंसर होगा 9 by 20. Okay. Now
exactly what I did here. Yeah, you can mute yourself, Deepa. Whatever I did here, friends, I'm exactly doing the same thing in my code. I'm again repeating. I'm not doing anything other than what a child at CBSE fourth or fifth standard would be doing with fractions. I'm just translating that concept into a code. Self dot numerator, which is 1, this one, into other fraction or denominator, which is this plus, see, plus. Self dot denominator, which is 4, into other fraction dot numerator. What is this? Yes. 1 into 5 plus 4 into 1 is 5 plus 4. And denominators multiply, yaar. What's the big deal? Just multiply. You get 20. So you made a new fraction object. आपने 9/20 का एक नया फ्रैक्शन ऑब्जेक्ट बनाया और उसे रिटर्न किया इनटू f अंडरस्कोर 3 और उसे प्रिंट भी किया. चेक करना है, right? So I hope this is going simple and clear. This is what I wanted to do with you. And we optimized every second today. Therefore, we could do this much. Okay? Right? So we started on dot on time, so we will end dot on time because my topics which I exactly planned at 2 o'clock got over just now. Right? So okay, one small message from Lubna. Everybody should fill up their attendance sheet. There are some forms, maybe it's a feedback form, maybe it's attendance link, whatever it is, please fill it up. So if you miss filling your attendance, you will be marked absent even even if you're part of the workshop. Okay, so please do the needful. And tomorrow we are going to meet for my session in the afternoon. We are going to meet at 2:30, and for morning session, Lubna is going to highlight to you. Lubna, over to you. Yes, Lubna, over to you.